Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video, we are going to learn about congestive heart failure nursing care plan, and through this video, you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का नर्सिंग केयर प्लान लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नर्सिंग केयर प्लान में यहाँ पर डिफरेंट नर्सिंग स्टेप्स हम यूज करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन। यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान के हमारे स्टेप्स होंगे। नर्सिंग केयर प्लान से पहले देखते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो देखते हैं एक बार कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। Here, heart failure, also known as congestive heart failure. Heart failure occur when the heart muscles does not pump blood as well as it should. When this happens, blood often back up and fluid can build up in the lungs, causing shortness of breath. Next, congestive heart failure is when the heart does not pump blood around the body efficiently. This can cause symptoms such as congestion and swelling due to fluid retention. Next, in congestive heart failure, the heart cannot pump blood effectively and the cells do not receive adequate nourishment. As a result, the body cannot function properly. ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको हम हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान ऑन हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो यहाँ पर वीडियो में टोटल 6 नर्सिंग केयर प्लान देंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। तो देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट verbalize out chest pain, dyspnea upon exertion and fatigue, and objective data, irregular heartbeat, heart rate of 128, jugular vein distension, edema, decreased urine output, decreased peripheral pulses. After writing these data, we write the nursing diagnosis. नर्सिंग डायग्नोसिस के पर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, ये नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं गोल होगा टू मेंटेन एडिक्वेट कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन, रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटरवेंशन और प्लानिंग में इस पेशेंट को हम क्या क्या इंटरवेंशन देंगे। रेशनल इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो इंटरवेंशन पेशेंट को देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो इंटरवेंशन हमने तैयार किया उनको अप्लाई करना, एक्शन में लाना है। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन, चेक द पेशेंट्स वाइटल साइन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्ट बीट एट least every 4 hours. Rational yoga to assist in creating an accurate diagnosis and monitor effectiveness of medical treatment. Implementation yoga, patient's vital sign and characteristics of heartbeat checked. Number second, assess breath sounds by auscultation. Rational yoga, breath sound of critical rails are important sign of heart failure. Implementation yoga पर auscultation completed. थर्ड देखते हैं ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ डिक्रीजिंग पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन सच एज स्लो कैपिलरी रिफिल, फेशियल पैलर, साइनोसिस एंड कूल क्लैम स्किन। रेशनल होगा द प्रेजेंस ऑफ साइन ऑफ डिक्रीजिंग पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन इंडिकेट deterioration of the patient status which require immediate referral to the physician. Implementation होगा ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ डिक्रीजिंग पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। नंबर 4 देखते हैं एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, रेशनल होगा टू इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल। इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड। नेक्स्ट नंबर 5, एडमिनिस्टर द कार्डिक मेडिकेशंस एंड डायरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, रेशनल होगा टू एलिविएट द सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर एंड टू ट्रीट द अंडरलाइंग कंडीशंस। इम्प्लीमेंटेशन होगा एडमिनिस्टर द कार्डिक मेडिकेशंस एंड डायरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। नंबर 6,
एजुकेट पेशेंट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इम्प्लीमेंटेशन होगा रेशनल होगा। Chronic stress may also cause an increase in adrenaline level, which tend to increase the heart rate, respiratory rate, and blood sugar level. Implementation of education given to patient on stress management. Number 7, instruct patient on to reduce the workload of the heart rate lower depending on the severity of the patient's heart failure. They may need to modify daily activities. They may need assistance with activity of daily living, plenty of rest periods, and use exercise regimens. Implementation of patients instructed to reduce the workload of the heart number. तो ये था नंबर 7 इंटरवेंशन। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइटेड द इवेल्यूशन स्टेप्स। तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर फर्स्ट का इवेल्यूशन। तो हमको इवेल्यूशन में लिखना है पर कार्डिक आउटपुट मेंटेन। जो मोर गोल था टू मेंटेन रिक्वायर्ड कार्डिक आउटपुट, वो हमने अचीव किया है। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड पर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वैल्यूज अबाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा ब्लड प्रेशर लेवल ऑफ 190/85, टेकिकार्डिया, pitting edema of the ankle, edema in extremities, jugular vein distension, adventitious breath sound, crackle rails, high blood pressure, oliguria, cough, S3 heart sound. After writing these data, we write the nursing diagnosis. तो देखते हैं nursing diagnosis number second. Fluid volume access related to reduce glomerular filtration rate, decrease cardiac output. गोल होगा to maintain normal fluid volume. Intervention देखते हैं first. Auscultate lungs to find any crackles or wheezes. Patient होगा heart failure, especially left side heart failure may lead to pulmonary congestion as evidenced by crackle or wheezes upon auscultation of the lungs. Implementation होगा lungs auscultation completed. Number second, assess for peripheral edema, anasarca and jugular vein distension. Patient होगा sign of fluid retention include edema in the lower edge and feet, which is often pitting or generalized edema to the entire body known as the anasarca. The most reliable sign indicating fluid overload is jugular vein distension. Implementation लिखना assessed for the peripheral edema, anasarca and jugular vein distension. Number third देखते हैं maintain upright position. रेशन होगा same Fowler's position or Fowler's positioning will help the patient breathe easier and maintain comfort. Implementation होगा upright position maintain. Number fourth, maintain a fluid balance. Start monitoring the input and output of the patient. Rational होगा to monitor patient's fluid volume accurately and effectiveness of the actions to monitor the progress of the excess fluid volume. Implementation होगा fluid balance. Start maintain. Number fifth, restrict fluid intake as instructed by the physician. Rational होगा to reduce fluid volume and manage edema. Implementation में लिखना है fluid intake instructed. Number 6, check the patient's weight daily. Rational होगा diuretics are needed to manage heart failure but may put the patient at risk for sudden fluid loss, which is reflected through his or her weight. Implementation लिखना है weight checked. Number 7, monitor patient's serum electrolytes and renal function to physician as needed. Rational होगा the use of diuretics may result to excessive fluid shift and electrolyte loss. Implementation लिखना है monitored patient's serum electrolytes. Number 8, administer diuretics. Rational होगा diuretics are often prescribed as they rid the body of excess fluid which will decrease edema and dyspnea. Implementation लिखना है diuretics administer. Number 9, instruct on the sodium and fluid restrictions. Rational होगा diet education may include decreasing sodium, restricting fluids. Implementation लिखना है instructed on the sodium and fluid restrictions. After writing these interventions, we write the evaluation steps. देखते हैं सेकंड केयर प्लान का evaluation यहाँ पर। तो evaluation लिखना है यहाँ पर नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन। मीन्स जो हमारा गोल था टू मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम
वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस। तो इस तरह से यहाँ पर केयर प्लान नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3। केयर प्लान नंबर 3 हो गया पर इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। तो देखते हैं इसमें nursing assessment subjective data patient says that I am having difficulty in breathing and shortness of breath. Objective data SpO2 level of 85%, cup respiratory rate of 25 breath per minute for this sputum. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया पर इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू पल्मोनरी कंजेशन secondary to congestive heart failure. गोल होगा टू मेंटेन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट असेस द पेशेंट वाइटल साइन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन at least every 4 hour rational होगा to assist in creating an accurate diagnosis and monitoring effectiveness of medical treatment. Implementation होगा vital sign assess number second administer supplemental oxygen as prescribed rational होगा to increase the oxygen level. Implementation होगा oxygen administer number third elevate the head of the bed rational होगा head of the bed elevation enabling the patient to breathe more effectively. Implementation होगा head of the bed placed in elevated position number fourth provide same Fowler's position rational होगा same Fowler's position help improve the expansion of the lungs. Implementation होगा पर semi Fowler's position provided number fifth administer the prescribed bronchodilator steroids or combination of inhaler nebulizer as prescribed. Bronchodilator steroid inhaler or nebulizer rational होगा bronchodilator to dilate or relax the muscle of the airway, steroid to reduce the inflammation in the lungs, inhaler or nebulizer to facilitate relaxation of the airway. Implementation begin prescribed medication administered. After writing these interventions we write the evaluation. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation यहाँ होगा इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन्ड। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 3 को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4। केयर प्लान नंबर 4 हो गया पर एक्टिविटी इंटॉलरेंस। तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज दैट आई एम फीलिंग टायर्डनेस जनरलाइज वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ऑब्जेक्टिव डाटा असेस द पेशेंट्स एक्टिविटी लेवल असेस द वाइटल साइन। नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है हमको एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। गोल होगा द पेशेंट विल demonstration active participation and increase in activity level. Intervention देखते हैं फर्स्ट check the patient's actual and perceived limitation to the physical activity ratio to create in baseline of activity level. Implementation लिखना है patient's activity level check. Number second encourage progressive activity through self care and exercise as tolerated ratio to gradually increase the patient's tolerance to the physical activity. Implementation लिखना है encourage for the self care activities. Number third, explain the need to reduce sedentary activities such as watching television and using social media in a long period. Rational का sedentary lifestyle is the risk of heart disease. Implementation लिखना explain the need to reduce sedentary lifestyle. Number fourth, advise the patient to alternate period of physical activity with rest and sleep. Rational का this reduce fatigue and provide energy. Implementation लिखना है patient advised to physical activity and rest. Number fifth, deep breathing exercises and relaxation techniques is to allow the patient to relax while at rest and to facilitate effective stress management. Implementation of teaching given about the breathing exercises. Number 6, provide adequate ventilation in the room. Rest to allow enough oxygenation in the room. Implementation of adequate ventilation provided. Number 7, refer the patient to physiotherapist or occupational therapy team as required. Rest to provide a more specialized care for the patient in the term of helping him or her build confidence in the increasing daily physical activity. Implementation whenever patient refer to the physiotherapy. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर फोर्थ केयर प्लान का evaluation. तो यहाँ evaluation होगा now patient actively participate in daily living activities as tolerated. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5।
नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 हो गया पर रिस्क फॉर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा abnormal ABG study changes in the respiratory rate, depth, or rhythm, tachycardia, crackle upon auscultation. After writing these data, we rated the nursing diagnosis. Nursing diagnosis का risk for impaired gas exchange related to pulmonary congestion को होगा to improve gas exchange. Intervention देखते हैं first assess the patient's vital sign and characteristics of respirations at least every 4 hours. Rest होगा to assist in creating an accurate diagnosis and monitor effectiveness of medical treatment. Implementation लिखना है vital sign assess number second. Monitor pulse oximetry रेस्ट होगा abnormal oxygen saturation level are a sign of hypoxemia in lack of oxygen in the blood. Implementation लिखना है pulse oximetry monitor. Number थर्ड देखते हैं monitor arterial blood gases ABGs. ABGs measure the amount of oxygen and carbon dioxide in the blood. रेस्ट होगा implementation होगा next arterial blood gas history monitor. Number 4 administer supplemental oxygen as prescribed. रेस्ट होगा to increase oxygen level. Implementation oxygen administration. Number 5 encourage small but frequent meal ration to avoid abdominal distension and diaphragm elevation which lead to decrease in the lung capacity. Implementation encourage for the frequent meal. Number 6 elevate the head of the bed, assist the patient to assume semi-forward position. Ratio head elevation and semi-forward position help improve the expansion of the lungs, enabling the patient to breathe more effectively. Implementation head of the bed placed elevated and semi-forward position given. Number 7 educate on cupping and deep breathing exercises. Clearing the airway and expanding the lungs will assist in promoting oxygenation. Implementation education given about deep breathing and cupping exercises. Number 8 will administer medications as ordered. If the impaired gas exchange is in relation to the excess fluid volume, medications such as diuretics may be required to treat the underlying causes. Implementation medications administered. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 5 का evaluation होगा यहाँ पर गैस एक्सचेंज इम्प्रूव. to improve gas exchange वो हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 6. तो केयर प्लान नंबर 6 हो गया डेफिशिएंट नॉलेज. तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में subjective data patient verbalize that I want to know more about congestive heart failure. Objective data patient looking anxious and restlessness about disease condition. Nursing diagnosis में लिखना है पर deficient knowledge related to new diagnosis congestive heart failure. गोल होगा to improve level of knowledge. Intervention देखते हैं first assess the patient knowledge level. रेशन होगा early assessment help intervention process. Implementation लिखना assess the patient's knowledge level. Number second assess the patient readiness to learn, misconception and blocks to learning. Example denial of diagnosis or poor lifestyle habit. Rational होगा to address the patient cognition and mental status about congestive heart failure and to help the patient overcome block to learning. Implementation assess the patient readiness to learn, misconception. Number third explain what the congestive heart failure is, its type and its management. Rational to provide information about the congestive heart failure. Implementation लिखना है explained about congestive heart failure. Number 4 educate the patient about lifestyle changes that can help manage congestive heart failure. रेशन होगा sedentary lifestyle is the risk of heart disease. Implementation लिखना है education के about lifestyle changes. Number 5 में लिखना है inform the patient the detail about the prescribed medications, example drug class use, benefit, side effect and risk to treat heart failure. Rational method to inform the patient of each prescribed drugs and to ensure that the patient fully understands the purpose, possible side effect, adverse events and self-administration details. Implementation information given about the medications. Number 6 refer the patient to a dietitian and physiotherapist. Rational to enable to the patient to receive more information in managing diet and physical activity from specific member of the healthcare team. Implementation refer to the dietitian and physiotherapist. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 6 का evaluation. तो evaluation लिखना है यहाँ पर लेवल
ऑफ नॉलेज इम्प्रूव, मीन्स जो हमारा गोल था टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज वो हमने अचीव किया है। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 6 को हम कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट फेलियर के टोटल हमने यहाँ पर वीडियो में 6 नर्सिंग केयर प्लान देखें। तो आप वीडियो की सहायता से यहाँ पर अपने नोट्स लिख सकते हो, अपना असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।